तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूट रिमेटिक फीवर। नाउ एक्यूट रिमेटिक फीवर को डिफाइन कैसे करते हैं? दैट इट इज अ ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर followed by streptococcal infection, typically after 2 to 3 weeks of group A streptococcal pharyngitis. It is an autoimmune disease, inflammatory disorder, which is followed by streptococcal infection, typically after 2 to 3 weeks of group A streptococcal pharyngitis. It occurs mostly in children of age group 5 to 15 years, and the prevalence is less than 1 in 1000 in the developing countries and 10 in 1000 in the school children. Only about 3% of the pharyngitis developed rheumatic fever. Only 3% population which develop pharyngitis develops rheumatic fever. What is the etiopathogenesis? So etiology is the group A beta hemolytic streptococcus, and the pathogenesis is that streptococcal pharyngitis by group A beta hemolytic streptococcus. So molecular mimicry of streptococcal cell wall protein and carbohydrate. तो देखो इसको कैसे समझते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस है ना। स्ट्रेप्टोकोकल ने क्या किया? फ्रेंजाइटिस किया। इस फ्रेंजाइटिस को किसने कॉज किया? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, उसके जो सेल वॉल प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है, वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करते हैं। जो स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल है, उसकी जो सेल वॉल प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करते हैं। किससे मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करते हैं? हमारे खुद के बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हार्ट हो गया। जो हमारे हार्ट में प्रोटीन है, जॉइंट्स में प्रोटीन है, बेसल गैंग्लिया है, स्किन में प्रोटीन है, उससे एकदम मिमिक्री, एकदम आइडेंटिकली सेम रहते हैं। तो हमारा बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल प्रोटीन है या हमारा खुद का प्रोटीन है, हार्ट का, जॉइंट का, बेसल गैंग्लिया का, स्किन का। तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुए, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द सेल वॉल प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स which cross reacts with the connective tissue of heart, joint, basal ganglia and skin. तो खुद की बॉडी हमारे बॉडी से हम हमारे खुद के लिए एंटीबॉडीज बना रही है। जिसके कारण एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हुआ, विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू द डैमेज। ये पैथोजेनेसिस। तो ब्रीफ में क्या है, जैसे फ्रेंजाइटिस हुआ। फ्रेंजाइटिस किसने कॉज किया? ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अभी ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इसने ये जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस है, उसके जो सेल वॉल प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट्स है, वो क्या शो करते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। किससे मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करते हैं? तो जो हमारे हार्ट के प्रोटीन है, जॉइंट्स के प्रोटीन्स हैं, बेसल गैंग्लिया एंड स्किन के प्रोटीन्स हैं, उनसे मॉलिक्यूलर मिमिक्री शो करती है। तो हमारी खुद की बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट द सेल वॉल प्रोटीन्स एंड द कार्बोहाइड्रेट which cross reacts with the connective tissue of heart, joint, basal ganglia, and skin, which will ultimately lead to the inflammatory response and damage will occur. Now, what are the clinical feature in rheumatic fever? We have sore throat in the initial 3 to 4 weeks earlier, the fever, the joint pain, the abdominal pain, polyarthritis, pancreatitis, subcutaneous nodules, and satiated stance. It is a purposeless, involuntary, rapid, jerky movements. Purposely, आप खुद से नहीं करते हो, खुद ब खुद रैपिड मूवमेंट होने लगता है हाथ का, पैर का, ठीक है। एंड इरिथमा मार्जिनेटम, इरिथमा मार्जिनेटम। तो अगर आपको इसको डायग्नोज करना है दैट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में रूमेटिक फीवर है कि नहीं है रूमेटिक फीवर, तो आप इसको कैसे डायग्नोज करोगे? तो डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस है ये जोन्स की। तो एक होता है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स ने बताया कि आप कैसे किसी को कह सकते हो कि हाँ उसको रूमेटिक फीवर है। तो उसने क्लासिफाई किया मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। these some are the major criteria and there are some minor criteria. तो मेजर क्राइटेरिया में क्या है? तो इसको मैंने एक ट्रिक बनाया है कि जैसे कि जोन्स है, तो जोन्स लव जेन्स, जोन्स लव जेन्स। तो जेन्स में क्या है? जे फॉर जॉइंट, दैट इज माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस। माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस मतलब पॉली मीन्स मल्टीपल, आर्थराइटिस मतलब joints inflammation, and which is migratory in nature. So migratory polyarthritis. And heart means pancarditis. Pan means all and carditis means inflammation of heart.
Means all the layers of the heart gets inflamed, all the three layers of the heart. And the nodules, we have subcutaneous nodules. And the E for erythema marginatum, and S for sate vitescens. Sate vitescens अभी ऊपर बताया that it's a purposeless jerky rapid movements, है ना? And what are the minor criteria? Minor criteria, we have trick area like IERIA area, that itself, if the patient has a previous history of rheumatic fever, it can lead to the rheumatic fever. And if there is increased ESR, R means raised temperature, that is fever. I for increased PR interval, and A for arthralgia. So these are the minor criteria. So if there is two major criteria positive, then we can say that the patient is suffering from rheumatic fever. If there is a presence of two major criteria, we can say that the patient is suffering from rheumatic fever. Or if the alternative, there is a presence of one major criteria or two minor criteria plus two minor criteria, that we can say it is positive for rheumatic fever or rheumatic heart disease. So what the criteria that is two major criteria should be there to say that he is suffering from rheumatic fever or rheumatic heart disease. Or alternatively, one major criteria plus two minor criteria should be there to say that he is suffering from rheumatic fever or rheumatic heart disease. Now, talking about investigation, what investigation we should do, then there is a non-specific investigation and specific investigation. In non-specific investigation, we have leukocytosis, raised ESR, and increased C-reactive protein. And we have specific investigation like anti-streptolysin O antibodies, which is also known as ASO titer. It should be greater than 200 unit, which is significant. And chest ray, it's so cardiomegaly, pulmonary congestion, and echocardiography, so cardiac dilation and valve abnormalities. And what should be the management in rheumatic heart disease or rheumatic fever? A single dose of benzyl penicillin is sufficient, which is 1.2 million unit intramuscular. Benzyl penicillin 1.2 million unit intramuscular. Or oral phenoxymethyl penicillin. Oral phenoxymethyl penicillin. It is sufficient. So thank you.